Risk assessment. This is how we can identify the risk of the hazardous material. Now there are two approaches for risk assessment. First one is the qualitative approach, in which no calculation is required, and the second approach is quantitative, where calculations are required. So quantitative approach is more specific for using it in any field of life, whether it is medical, food or agriculture industry. Now the quantitative approach of risk assessment is based on two components. The first is the magnitude of the potential loss, and the second one is the probability or the chance that the loss will occur. So these are the two important components or the pillars of the quantitative approach for risk assessment. Now we can assess the risk in different fields. Usually it is used in medical or hospital services. रिस्क असेसमेंट बहुत पुराना मिलिट्री इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, ऑयल इंडस्ट्री में, इवन इन न्यूक्लियर एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज. आजकल फूड इंडस्ट्री में भी रिस्क असेसमेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज के ज़रिए की जा रही है. सो देर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर असेसिंग द रिस्क एंड वी कैन यूटिलाइज देम डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड इन विच वी आर इन्वॉल्व टू डिटर्मिन द रिस्क. Now, for example, Food and Drug Administration regulates the food safety through risk assessment. 1973 में पता चला कि बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कलर फूड में. इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स मीट में ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं. 1973 में FDA ने कहा कि इन सारे मटेरियल्स जो कि कैंसरस हैं, इनकी क्वांटिटी इतनी कम कर दी जाए कि ये कैंसर कॉज ना कर सकें. इसके अलावा देयर इज USA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी दैट assess the environment risk through this risk assessment methodology for public health safety. Then Stockholm Convention. This is also a risk framework assessment for chemicals, that how much they are dangerous for the lab workers, for the public as well. Now risk assessment is not only used for different vast fields. We can even detect the risk assessment for small subpopulations. For example, if the risk assessment is high in small subpopulation, it means that they are abnormally exposed to a particular product. इसके अलावा रिस्क असेसमेंट हम सब पॉपुलेशन में तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब रिस्क के चांसेस लेस देन 1% हो. बट फॉर दैट वी यूज टू components for measuring the risk less than 1% in small subpopulation. First one, all infants younger than X days, and the second component is the recreational user of a particular product.